इसमें 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है सर, जिनको जीर्णशीर्ण माना गया है। किस आधार पे माना गया, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। सर ज्वाइंट सर्वे आंखों से देख के आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा जीर्णशीर्ण है। तो ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने से कि जो है मकान मालिक ने कहा कि हमारा मकान खाली करा दीजिए, ये खाली नहीं कर रहे हैं। ये आया है ना इसमें, उक्त मकान उनके नाम दर्ज है जो कि अनावेदक खाली करवाना चाहते हैं। आप ये बताइएगा कि आपकी जो टीम थी ये कब गई थी वहां पर, अंदर कब गई थी मकान के, जब आपने जांच की थी ना, कब गई थी जांच करने के लिए? आपने बताया ना टीम गई थी इतने सारे अधिकारियों की। मकान कब देखा था भीतर से जाकर? डेटेड लॉर्डशिप 24/9/2019। अरे नोटिस आपने 17 में दिया और जांच 2019 में कर रहे हैं। नोटिस तो आपने जो है सेक्शन 221(3) का 27/5/17 को दिया था। बिगड़ जांच की नोटिस दे दिया था क्या? निवेदन करी जी, एडिशनल चार्ज सीएमओ गोटेगांव। आप बताइएगा क्या जांच है? नरसिंहपुर है एडिशनल चार्ज इन द तो उससे हमें मतलब नहीं, हो तो सरकार ने बनाया ना एडिशनल चार्ज। जी अभी बताइएगा, नरसिंहपुर का मैटर है ना ये क्या जांच हुई थी आपकी इस बिल्डिंग के बारे में? सर इसमें सर नस्ती का सर हम लोगों ने देखा। क्या देखा था सर नोटशीट सर हम लोगों ने। माइक का इस्तेमाल करिए, आगे आ जाइए। सर नस्ती सर कल आई सर देखी थी जी सर, इसमें सर नस्ती में लिखा हुआ है जी सर। नगर पालिका परिषद के क्षेत्रांतर्गत सर जर्जर मकानों का सर्वे सर स्थल निरीक्षण किया गया था, जिसमें सर संयुक्त टीम थी नगर पालिका की, राजस्व की, तहसीलदार की और आरई व पटवारी की। किस प्रावधान में, कानून के किस प्रावधान में ये टीम गठित की गई थी? सर आर्टिकल 221 में सर जर्जर मकानों के 221 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन आर्टिकल बता रही है मैडम। सॉरी सर, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट। हाँ दीजिएगा, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट दीजिएगा। जी जी 2 and 3 लॉर्डशिप है 221 लॉर्डशिप 2 and 3। हाँ पढ़िएगा ना, तो एक से बताते जाइएगा। तो टीम कहाँ लिखा है इसमें कि राजस्व अधिकारी की टीम रहेगी? सर ज्वाइंट सर्वे सर एक साथ हो गया था। जी फिर क्या हुआ उस ज्वाइंट सर्वे में? फिर उसके बाद सर पीछे सर इसमें 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है सर, जिनको जीर्णशीर्ण माना गया है। हाँ किस आधार पे माना गया, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। सर ज्वाइंट सर्वे आंखों से देख के आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा जीर्णशीर्ण है। कुछ तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी ना इसमें। इस टीम में थे आपके सिटी प्लानर थे, आर्किटेक्ट थे, सिविल सिटी इंजीनियर थे, बताइए ना इस टीम में कौन कौन था? सर तत्कालीन एई किस तरह इसमें हस्ताक्षर। एई क्या होता है? असिस्टेंट इंजीनियर फॉर द म्युनिसिपैलिटीज। अच्छा, क्या कहा उन्होंने, क्या क्या जांच की? सर पीछे सर 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है। अरे वो लिस्ट तो लग गई मैडम, ठीक है, लिस्ट तो जिसको आपने चाहा उसको लगा दिया। जांच करने के क्या पैरामीटर्स हैं? और फिर 221 में आपने नोटिस कब दिया? 221 में यू आर रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस टू द ऑक्यूपायर। पढ़ा है ना आपने? 221 की नहीं पढ़ा? हाँ 221 में नोटिस कब दिया आपने? नोटिस वाज सेंट लॉर्डशिप इन 27/5/2017 किसको? टू द नेमली कामता पांडे लॉर्ड। 27/5/2017। हाँ कामता पांडे कौन है ये? सर मैं उनके नहीं है, लैंडलॉर्ड है, लॉर्डशिप लैंडलॉर्ड है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको नोटिस दिया आपने, ठीक है। इसमें नोटिस किसको दिया हुआ बताया है? Void danger is इतना put up issue and notice to the owner or occupier to put up इतना, the council shall cause notice in writing to be given to the owner or occupier। फिर first owner of take down, फिर कब हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ये किस प्रोविजन में नोटिस दिया आपने? अंडर द म्युनिसिपैलिटीज एक्ट। किस प्रोविजन में? म्युनिसिपैलिटीज एक्ट समझ गए, 221 एक में दिया, 2 में दिया, 3 लॉर्डशिप है 3 में नोटिस का ये आपका अंडर सेक्शन 221 ब्रैकेट में 3 ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एक्ट। फिर आपने कब इसको गिराया बिल्डिंग को? 2017 के बाद। फॉर योर फेलियर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द, हाउ कैन सब रेवेन्यू ऑफिसर पास एन ऑर्डर अंडर द गार्ब ऑफ सेक्शन 133 सीआरपीसी? और बताइएगा ना आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए इसमें? यू हैव नॉट, in case of imminent danger the council shall have power without giving notice to demolish such portion of the building. When did you demolish it? From 2017. And why you were hand in glove with the owner and the occupier? 2013 में पहला नोटिस है। चलिए होगा 2013 में होगा नोटिस, चलिए आपकी बात लिख लेते हैं 2013 में। फिर
आपने क्या नोटिस दिया इन लोगों को, टेनेंट्स को? लॉर्डशिप हमें तो 2017 में जब पहली 13 बार में पहला नोटिस है ना आपको, तो आप ही ने तो बताया बीच में कि 2013 affidavit, Lordship, from the affidavit filed by tenants who are petitioner here, they have admitted that the property in dispute is in a dilapidated condition. कहाँ है वो एफिडेविट? Annexure P 2013 के नोटिस की डेट कहाँ से आई है, मुझे ये बताइए। affidavit, sir, Lordship. हाँ, पेज नंबर ये पेज नंबर 29, Lordship. 29 of my petition? return, Lordship. आपका रिटर्न। Lordship. Annexure 8, Lordship. एक सेकंड रुक जाइए, देखते हैं आपका रिटर्न भी देखते हैं। पेज नंबर 29। इन्होंने म्युनिसिपलिटी नरसिंहपुर के सीओ को दिया, लॉर्डशिप। अच्छा, देखते हैं, चलिए। एंड दे हैव एडमिटेड दैट द बिल्डिंग इज इन डिलैपिडेटेड कंडीशन। पढ़िएगा पढ़िएगा। आई शुड रीड, लॉर्डशिप। हाँ। समक्ष नोटरी नरसिंहपुर, पेश हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरसिंहपुर सोनाबाई जैन एज स्वयंसो। मैं शपथ पूर्वक सत्य निष्ठा पूर्वक कथन करती हूँ यह कि शपथकर्ता गांधी वार्ड कंदेली तहसील जिला नरसिंहपुर की स्थायी निवासी है। यह कि कामता प्रसाद पांडे आत्मश्री नर्मदा प्रसाद पांडे का मकान गांधी वार्ड कंदेली नरसिंहपुर में स्थित है, जो पुराना जर्जर है। Let she complete. We have denied in specific reply. No such affidavit has been given. Nothing has been mentioned by the SDU. This specific reply that no such affidavit has been given. He is relying on that affidavit which we have denied. ये तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया है आप। हमने डिनाई किया in reply of the SDM that no. आपके रिकॉर्ड में है ये एफिडेविट? 6 एफिडेविट ऐसे हैं, लॉर्डशिप। अच्छा, नॉट वन। हाँ। और इन्होंने इसी बेस पे सीएमओ नरसिंहपुर से लॉर्डशिप। तो ये नरसिंहपुर को आपको दिए थे एफिडेविट कि इनको सीएमओ को दिए थे? सीएमओ को दिया था। सीएमओ की फाइल से दिखाए ना, सीएमओ मैडम तो खड़ी है ना सामने, देखिए उस फाइल से दिखा दें ये एफिडेविट कि उन्होंने दिए थे। जब आपके पास कॉपी है तो सीएमओ के पास तो होगी ही, होना चाहिए, अनलेस आपने उसमें से निकाल लिए फाइल में से। Something is favoring me, why should I? नहीं, बताइए कहाँ है वो एफिडेविट? In the my record it is not. तो फिर ये जवाब कैसे आ गया? फर्दर लॉर्डशिप इन्होंने 18/1/13 Yes. नोटिस एफिडेविट दिया, हाँ? लॉर्ड। One affidavit is here. किसका है बताइएगा। नहीं, आपकी फाइल नहीं देखेंगे इस तरीके से वकील साहब। Lordship, one affidavit is here, Lordship. दिखाइए। 13/6/2017. 13/6/2017 का एफिडेविट ही तो है ये जो इन्होंने बता रहे। Lordship. हाँ, दिखाइए कहाँ है आपका रिकॉर्ड में। इनकी फोटोकॉपी है वो जो इनने लगाई है केस में। ओरिजिनल होगा ना? नहीं होगा। Original it is. आपकी अंगूठा निशानी की जांच करवा देंगे फिर। ये तो डेथ हो चुकी है, बहुत पहले हमने रिप्लाई किया है। नहीं, किया हुआ। that my lord can have the powers to do that. Here the case is that my lord under one they have when we were I was arguing on the point that 221 has not been followed. They come with the affidavit and reply that no, this proceeding under 133. हाँ, तो ये जो नोटिस है 2017 का, ये दिस इज एनेक्शर 27/5/17 का नोटिस इज एनेक्शर। इट इज annexure, लॉर्डशिप, at page 22, lordship, of my return, ऑफ योर रिटर्न। lordship, page 22। सर कलेक्टर और जो डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग भोपाल के उसमें ज्वाइंट उसमें सर्वे हुआ। सर्वे के बाद दे सर्व्ड अस नोटिस कि 3 दिन के अंदर आप मकान डिमोलिश करिए। ये 2017 में। बिफोर दैट आई वाज नॉट इन पिक्चर, लॉर्डशिप। लैंडलॉर्ड वाज नॉट एट ऑल पिक्चर फ्रॉम 13 to 17, so 13 to 19। It is not that municipal corporation is working on our behest, lordship. It is the collector's direction. That's why the team of Tehsildar and SDM was formed, lordship. And it is their admission that इन्होंने इसके बदले में सर 2 मकान भी लिए, ये कहते हुए कि मकान जर्जर है और 10 दिन का हमें समय दिया जाए खाली करने के लिए। It is none of their case that house is not in dilapidated condition. पढ़िएगा, अगला पेज पढ़िएगा जरा, पेज 23 पढ़िएगा। अनुभागीय अधिकारी क्या लिख रहे हैं प्रकरण दर्ज करके? आवेदक कामता प्रसाद पांडे सजन सच के द्वारा अनावेदक दीपक ब्रजेश की मां सोनाबाई जैन से अपनी खानदानी पैतृक जर्जर मकान पुराना सजन सच नरसिंहपुर श्याम टाकीज के पास स्थित खपड़ेल व ईंट खपड़ा डबल स्टोरी में लगभग 80 वर्ष से अधिक पुराना है। आवेदक कामता प्रसाद पांडे द्वारा बताया गया कि उक्त मकान उनके नाम से दर्ज है, जो कि अनावेदक दीपक ब्रजेश से खाली करवाना चाहते हैं। उक्त के संबंध में आपके द्वारा आवेदक कामता प्रसाद पांडे निवासी गांधी वार्ड को पत्र क्रमांक सचन सच के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक भवन अथवा संरचना वर्षा ऋतु का प्रभाव संबंधी पत्र जारी किया गया था, जिसमें जर्जर की स्थिति में जानमाल होने रोके जाने संबंधी लेख किया गया था। अतः आप
अतः उक्त के संबंध में आवेदक कामता प्रसाद पांडे के मकान मौजा कंदेली में पुराना वार्ड सच एंड सच नरसिंहपुर स्थित मकान अनावेदक दीपक जैन ब्रजेश जैन से तत्काल खाली कराया जावे, क्योंकि अनावेदक गण को दिनांक 17/9/2019 को समक्ष में समझाइश दी गई थी कि आप 1 सप्ताह के भीतर मकान खाली कर इस न्यायालय को सूचित करें, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक मकान खाली नहीं। 133 के अंतर्गत ही एक्सरसाइजिंग पावर। तो ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने से कि जो है मकान मालिक ने कहा कि हमारा मकान खाली करा दीजिए, ये खाली नहीं कर रहे हैं, ये आया है ना इसमें। उक्त तो मकान उनके नाम दर्ज है जो कि अनावेदक खाली करवाना चाहते हैं। सर ये हम तो आई केम इनटू पिक्चर व्हेन नोटिस वाज सर्व्ड ठीक है, फ्रॉम द एसडीओ। हाँ ठीक आई नेवर वेंट टू एसडीओ लॉर्डशिप। हाँ ठीक है। और उसके पहले 2013 में सर इनका एफिडेविट पढ़ लें, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इसकी कॉपी तो आपको एंडोर्स्ड है कामता प्रसाद को। आप बोल रहे हैं आप यू नेवर केम इन पिक्चर। I came in picture, Lordship, after this notice was served by the CMO Narsinghpur, Lordship. On- It is wide 25/5/2019. अच्छा तो इसकी उसके पहले I was nowhere in picture, Lordship. अच्छा 25/9/19 को ये एसडीओ साहब ने पत्र लिखा। जी हमें कि आप 3 दिन के अंदर ये मकान जो है मैं रीड लॉर्डशिप पेज 22 ऑफ माय रिटर्न लॉर्डशिप। आपकी अंडरटेकिंग फाइल कर दीजिए या रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आप जैसे ही खाली होगा इसको मकान को तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड दे विल हैव अ एंड इफ यू इंडक्ट एनी टेनेंट दे विल हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू बी इंडक्टेड एज अ टेनेंट। लॉर्डशिप ठीक है भाई, इनको लीगल राइट कोई इशू नहीं है लॉर्डशिप। My lord, may kindly see there. It was a case which they have filed on 31/8/19. Again, he is saying that after September he has received the notice. He himself has filed a case on 31/8 before the SDM. ठीक है वो तो ठीक है भाई, But my lord, मुद्दे की बात यह है कि मकान जर्जर है, इसका नोटिस ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी जारी कर चुकी है 2017 में। and we have filed the photographs that entire repair has been made. We have constructed the entire building properly. Photographs are already on record. They will not go into My lord, may verify this. under which authority you can construct it? Where is the building Repair, permit? my lord, we have mentioned that we have repaired the No, one. you cannot It's a repair it. two-room house, my lord. हाँ ठीक है, तो you vacate it. He will demolish it, reconstruct it. And They have to proceed on the due process of law. They file suit for eviction. नहीं वो सब Under 133, my lord, they are, our own high court says that it cannot be done. बताइए कौन सा जजमेंट है? Now there are 4 judgments. आपने eviction का दावा कब लगाया है इनके Sir, खिलाफ? we have not filed any eviction case, Lordship. You have taken a short circuit. Not Yes. Lordship. We came after the notice was served by the SDM कि आप 3 दिन में करें, otherwise आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा अच्छा। Otherwise we were not there at all. Now, हाँ हाँ now demonstrate, my lord. Kindly see the case which has been registered under this provisions, my lord. जी They have registered this case under 121B as per land revenue, my lord, circulars. my lord. 121B, it's the case number which has been registered by the revenue authority. 121B, yes. Now, as per the circulars, my lord, 121 is the miscellaneous works of the SDM with the power can be exercised. लैंड रेवेन्यू कोड में पढ़ रहे हैं। नहीं मतलब वो परिपत्र है राजस्व का, I will pass on this. आप दीजिएगा। तो 121 जो होता है वो इनका मिसलेनियस रेवेन्यू अथॉरिटीज का वर्क होता है। व्हेन वी आर्ग्यू दिस मैटर, my lord, so please to direct कि इस प्रोविजन में आपने रेवेन्यू में किस प्रावधान में किया, they file an affidavit saying no, we have done in 133 of CRPC, जी turning my lord their stand of 121B की रेवेन्यू का नए स्टैंड लेके आए ऑन एफिडेविट की 133 में किया। So that's why I have supplied all these 4 judgments, my lord, that if they are giving an affidavit कि they have proceeded under 133 of CRPC. Now, my lord, in the end, my lord, I only submit that in the reply we have specifically stated the building is not in a deprecated position. We have stated that it's in a complete proper condition. Photographs are already on record, my lord. It's a 2 rooms, completely, my lord, maintained by us, my lord. And last, that the affidavit has been denied. And we have taken a preliminary objection that you have to go before the rent control authority, which has not been considered by the SDM in its order. ठीक No evidence has taken. यस। I rest my. As per Lordship, now the position is the building. क्या है दीजिए, ये क्या है पोजीशन ऑफ बिल्डिंग। आज तो ठीक है, आप ये बताइएगा कि आपकी जो टीम थी ये कब गई थी वहां पर, अंदर कब गई थी मकान के, जब आपने जांच की थी ना, कब गई थी जांच करने के लिए? आपने बताया ना टीम गई थी इतने सारे अधिकारियों की, मकान कब देखा था भीतर से जाकर? Dated Lordship 24/9/2019. अरे नोटिस आपने 17 में दिया और जांच 2019 में कर रहे हैं। नोटिस तो आपने जो है सेक्शन 221(3) का 27/5/17 को दिया था, Lordship. बिगड़ जांच की नोटिस दे दिया था क्या जी? कब जांच टीम कब गई थी, डेट बताइए। Lordship, date is the Lordship 24/9/2019. अच्छा, एसडीओ साहब का ऑर्डर कब का है?
That is 19/11/19। Lordship. उसके बाद कब नोटिस दिया आपने 22/9/19 के बाद में? हाँ, और बताइए अब आप। Lordship, the case of petitioner is Lordship that I should move before the RCA for eviction as I am the landlord, Lordship. The reply of the reply annexure R11, Lordship, page 48 may kindly be seen. हाँ, और 11 My learned friend argued the same issue, Lordship, before the single bench, Lordship, जी। when he has filed the order against the order Page 48, 48, Lordship, 8 of your reply, 43, Lordship, 43 of your reply। Lordship. चलिए In this, Lordship, third paragraph, जी, फिफ्थ लाइन, लॉर्डशिप, जी। इस बाबत विवाद नहीं है कि 1990 के बाद से आवेदक तथा अनावेदक के बीच में किराएदारी के कोई संबंध न होने से आवेदक द्वारा अनावेदक से किराया नहीं लिया गया। इस प्रकार अनावेदक द्वारा लगभग 19-20 वर्षों से यानी 12 वर्ष से अधिक अवधि में मकान में रहने और अनावेदक तथा अनावेदक के बीच में किराएदारी के संबंध स्थापित न होने से अनावेदक का मकान में विरोधी आधिपत्य स्थापित हो जाने से मकान मालिक काबिज हो गए हैं। डिविजनल ऑफिसर डिसाइड करेगा ना, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। Lordship, what is their affidavit, Lordship? That's what I'm saying. हाँ। Their conduct was, they have taken the U-turn immediately, Lordship. हाँ, ठीक ये annexure R8 देख लें, Lordship. R80 तो दिखा रहे उसमें ये कह रहे हैं कि मकान डिलैपिडेटेड है और हम किराएदार हैं और हमें क्या है, वो तो एफिडेविट है ना R8 तो। R8 और R9, Lordship. हाँ, वो तो एफिडेविट है। और इसके बेस पे, Lordship, इन्होंने नगर पालिका से 2 मकान ले लिए, हाउस नंबर 36, 37, which I have annexed, Lordship, at page annexure R10, page 41. पेज इन्होंने एक खाली करने की बिना पे 2 मकान ले लिए, सर, देखा और वो मकान ये एंजॉय कर रहे हैं। नहीं मिले। अरे रुक जाइए। RHSDP योजना के तहत महारानी इतना 16 में निर्मित आवासों पेज 41, लॉर्डशिप। हाँ, पेज 41 ही पढ़ रहे। लॉर्डशिप, हितग्राहियों की अंतिम सूची अनुसार दीपक जैन पिता इतना वो 8वीं लॉटरी सिस्टम से आवंटित आवास का कब्जा सौंपा गया था। आपके द्वारा एक मुश्त राशि 25,000 रुपए में जमा किया गया है। शेष राशि 95,000 रुपए आप प्रतिमाह 1,000 रुपए के रूप में नगरपालिका में जमा कर रसीद प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आवेदन का आवंटन निरस्त करते हुए आपको आवास क्रमांक 36 आवंटित किया जाता है। चेंज किया सकते यथावत रहेंगे। हाँ, चेंज ऑफ हाउस हुआ, लॉर्डशिप, दूसरा अलॉट हो गया था। इसी प्रकार ब्रजेश शुक्ला को लॉर्डशिप दिया इन्होंने, वो 42 पे हमारे सामने है ही नहीं ना। नहीं है, इज देयर, पिटीशन नंबर 2 है वो, सर। अच्छा, पिटीशन नंबर 2 है। लॉर्डशिप 42 पे है, सर, लॉर्डशिप को। एंड लॉर्डशिप, द कंडक्ट ऑफ द petitioner, lordship, abrogate and reprobate is not applicable in this proceeding, lordship. They have enjoyed the fruits, saying that give us 10 days time, we will evict it. And the reply they are filing before SDM is that we are not the owner, lordship. And in this affidavit they have clearly admitted that we are the owner, we are the landlord, और हम जो है 10 दिन में खाली कर देंगे। इन्होंने उसकी बिना पे 2 मकान ले लिए, लॉर्डशिप। There are the 3 judgments of Supreme Court, lordship, which says there should not be abrogate and reprobate in the same proceeding. Proceeding before the SDM and municipality, they were very humble. We are very poor, lordship. We don't evict us. Within 10 days, we will evict it. And now they are saying that I'm not the owner. I'm not the landlord. So abrogate, reprobate, Supreme Court again and again has said should be discarded in the same proceeding. The party submits that petitioners are taking contradictory stands one after another. Full stop. It is submitted that before the subdivisional officer, the stand of the petitioners was that the present respondent is not a landowner and he is not taking rent for last 19-20 years, and thus by way of adverse possession they have perfected their title as landlord. Full stop. On the other hand, they filed affidavits before the chief municipal officer seeking 10 days time to vacate the dilapidated structure. Full stop. It is also pointed out that petitioners number 1 and 2 have obtained allotment of houses under the IHSDP project in Maharani Lakshmibai Ward, Bhatia Tola, from the municipality of Narsingpur, as is evident from annexure R110 and R110, which are allotment letters dated 24/7/2017। क्या डेट है इसकी? इसकी डेट, लॉर्डशिप, 24/7/2017। 24/7/2017
whereby they were given allotment orders for house number 36 and 37 after changing the earlier allotment for house number 249 and Only 249. 250 respectively. 250. Full stop. Thus, it is submitted that petitioners are involved in the process of appropriate and reappropriate, Yes. which is not permissible in terms of the law laid down by Supreme Court in Prahlad Singh versus Colonel Sukhdev Singh, AIR 1987 SC 1145. In case of Jasraj Inder Singh versus Hemraj Multan Chand, AIR 1977 SC 1011 and AIR 1960 SC 941 in Satyadhyan Ghoshal and others versus Dev Ranjan Devi and another. Next para. After hearing learned concepts for the parties and going through the record, there is no dispute that the act of the subdivisional officer is to be examined in the light of the judgments of this High Court, Kerala High Court and Bombay High Court. Full stop. When these acts are examined, when these judgments are examined vis-a-vis act of the subdivisional officer, then in case of Virendra Kumar Maheshwari Supra, the coordinate bench of this High Court has held that for the purpose of passing an order under section 133, on receiving a report, the evidence is required to be taken as thought fit by the authority. Full stop. In fact, it is an integral part and mandatory requirement of section 133 of Criminal Procedure Code, however, even for passing preliminary order, the procedure has to be followed. Next para. Thereafter, it is held that an opportunity has to be given both to the prosecution to prove the allegations so leveled against the petitioner and to the petitioner an opportunity to cross-examine on the prosecution witnesses. Full stop. It is further held that for want of such opportunity, the acts of the subdivisional officer will be vitiated. Next, in case of Devki Amma, it is held that attempt of the party to evict the tenant from his tenanted premises, the order for which should be obtained under the provisions of the relevant law. For the present case, it will be the Land Accommodation Control Act. Full stop. In para 12, it is held that report prepared behind the back of the parties, and when notice of inspection was not given to either of them and the building was closed at the time of inspection, PW2 did not even enter the building, then such act cannot be said to be justified. Next, in para 13, in case of Devki Amma itself, referring to the judgment in case of TKSM Kalyan Sundaram versus Kalyani Ammal 1975 CRLJ 1717, Madras High Court observed that section 133 is attracted only in cases of emergency. This was approved by the Supreme Court in Vasant Manga Nikumba and others versus Babu Rao Bhikanna Naidu 1995 SUPP within bracket 4 SCC 54, when Supreme Court held that the dangerous condition of building is in present time but not in future, and read full stop.
in case of K. Harilal, Kerala High Court observed that the principle that can be culled out from the decision in case of Jose V. Tharayal versus Revenue Divisional Officer 2010 bracket में 2 bracket close KHC 217 bracket में SN is that the jurisdiction provided under section 133 CRPC is confined to public right only. It is pertinent to note that the cardinal principle that the first respondent gets power under section 133 CRPC only if a public right is involved has been totally lost sight of. Full stop. Next para. Bombay High Court in case of Shri Peter Fernandez noted judgment of Supreme Court in Kachrulal Agrawal Bhagirath Agrawal and others versus State of Maharashtra and others 2005 9 SCC 36 and has held that section 133 of the code as noted above appears in chapter 10 of the code which deals with maintenance of public order and tranquility. Full stop. It is part of the heading within inverted commas public nuisance inverted commas close. The term nuisance ye fir inverted commas as used in law is not a term capable of exact definition and it has been pointed out the exact definition. Full stop. Thereafter it is held that proceedings under section 133 of the code are not meant to settle private disputes between two members of the public or members of two households and for public authorities to waste their time in trying to settle such disputes. A magistrate under section 133 of the code exercises a public duty and he can exercise it only when jurisdictional facts are present. There were none present in this case. Are taken into consideration, then there is no iota of doubt that subdivisional officer was acting in excess of his jurisdiction. Full stop. He was trying to settle a private dispute and was acting as a middleman between the landlord and the tenant and was permitting a shortcut to be used by the landlord for seeking eviction of his property tenant. Next paragraph. However, when reply furnished by the petitioners before the subdivisional officer as is contained in Annexure R111 is taken into consideration, which has not been denied by filing any rejoinder, so also the affidavits which are part of the record as Annexure R18/R19, which though orally denied by Shri Ankit Saxena but not denied in writing by filing any rejoinder, are taken into consideration, then it is evident that and when they are read with the allotment letters issued by the municipality of Narsinghpur in favor of the petitioners, which according to Shri Tripathi are the letters of allotment of immovable property on the strength of rented property being in a dilapidated condition, are taken into consideration, then even right of the petitioners to continue in the said building which is admittedly in a dilapidated condition cannot be upheld. Full stop. Petitioners cannot take contrary stands as has been discussed by Supreme Court in Satyadhyan Ghoshal and others supra, wherein it is held that a party is required to take one stand and is not permitted to appropriate and reappropriate as per his convenience. Full stop. In the present case, on the one hand, petitioners
claim that they are not the tenants of the private respondent, as is evident from the reply filed by them before the sub-divisional officer, and then on the other hand before the High Court they take a plea that they, being tenants, can only be asked to vacate the suit premises only by resorting to procedure of eviction as provided under the Accommodation Control Act, full stop. This stand of the petitioner reflects on their intentions and clearly makes out that they have not approached the court of equity with clean hands, full stop. Thus, a party who is seeking indulgence of the High Court in its equitable writ jurisdiction fails to approach the High Court with clean hands and approbates and reapprobates about its stand, and after having already taken a benefit on the ground of property being in a deliberated condition, and thereafter seeking allotment of houses from the municipality under the IHSDP scheme, then it is not open to them to assail the order on merits, full stop. Next para. Thus, to conclude, this court is of the opinion that subdivisional officer exceeded his jurisdiction. He acted as an agent / middleman for the landlord without, and therefore in the light of the judgment of this High Court in Virendra Kumar Maheshwari Supra and that of Bombay and Kerala High Court, वो नाम डाल लीजिएगा, इतना Supra, SDO had no authority to order for eviction. Therefore, that order being not maintainable in the eyes of law is hereby set aside. Next para. However, setting aside of that order will not grant any direct and substantial relief to the petitioners who have already obtained an order of allotment of another house which is available on record on the pretext of the rented accommodation being in a dilapidated condition. Therefore, they are liable to evict the property to be handed over to the landlord for demolition of the said property, full stop. It is made clear that no repairs will be permissible in the suit property and it will be demolished, and further actions will be taken in accordance with law, full stop. A demolition report will be furnished to the CMO within 15 days of receipt of certified copy of the order. After the 15 दिन में दिवाली हो जाएगी ना? अच्छा, 30 दिन कर दीजिए, चलिए 30 डेज कर दीजिए, चलिए, और ये भी 30 डेज में पोजीशन देंगे, ठीक है? हाँ, तो हो गया आपको। क्या लॉर्डशिप 30 डेज का दिए ऐसा क्या हो गया? He's asking 30 days से दिवाली तो कराना है, ठीक है, इवन 11 तक कर ले सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 दिन हो गया ना, बस ठीक है, हम ऑब्लाइंग आपको वापस करो, क्या करना? इन अबव टर्म्स petitions are disposed of. ये मैडम का शुभ नाम बताइए, क्या नाम है मैडम?